the Indigo crisis that continues. Remember, 5 days that has already that we've been witnessing this unprecedented crisis. The airline has cancelled over 470 flights. This on Saturday itself. More than 100 flights that were cancelled in both Mumbai and Bengaluru. Amid this chaos, fare prices that have shot up, Civil Aviation Ministry has taken note of the situation and asked airlines to charge fair fares. The ministry has also directed Indigo to clear all pending passenger refunds without any delays. Indigo CEO Peter Elbers has apologized for the chaos, saying that the airline is rebooting and rescheduling its systems and expects operations to stabilize by the 15th of December. As disruptions deepen, Aviation Minister Ram Mohan Naidu has blamed Indigo's mismanagement and has ordered a high-level probe to identify accountability. SpiceJet MD Ajay Singh has stepped in, extending assistance and adding extra flights to reduce passenger inconvenience. Indian Railways has also come in to the rescue and has added extra coaches across 37 trains and is planning special services to handle the passenger rush. मैम आपकी फ्लाइट क्या कैंसिल हुई है क्या है? Yeah, it's got cancelled. Today's morning. In the morning we have flight at 5:30. And then you have been informed by Indigo that your flight is cancelled? No, actually my cousin, he works for the airport, so he informed us that our flight got cancelled. सर आपकी भी फ्लाइट कैंसिल हुई है? आप मेरी वाइफ की फ्लाइट बुक किया था रायपुर से मुंबई, वो कैंसिल हो गई। अभी जो मुंबई से रायपुर की उनकी फ़्लाइट थी, रिटर्न फ़्लाइट बुक थी, वो कैंसिल कराने में आया हूँ टू मेक श्योर कि वो दे गिव फुल रिफंड एंड यू नो अदरवाइज दे विल डिडक्ट फ्रॉम दैट इफ यू फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर नॉट अवेलेबल ऑनलाइन नाउ। हाँ, कस्टमर ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, कस्टमर केयर एंड ऑल एवरीथिंग नथिंग, दे डोंट पिक अप द फोन, नथिंग, दे आर कम्प्लीटली कोलैप्स्ड। Situation was very bad yesterday, but last night messages were flashed by the Indigo that 10 flights have been cancelled for today from Chandigarh. So the people have started not coming in big number. The people have started to come, but this numbers will be piling up as the day proceeds. So the issue is continuous, and the Indigo flights cancellation in Chandigarh are also similar. When you see the picture over here at the assistance center, people are really not getting clear answers. These are people who are still struggling to get on their flights, to get answers. Some of them say that their flights are showing on time, but when they are coming at the assistance center, their flights are showing cancelled. We have mothers who have been waiting for days alone with their children. मैम, आप लोगों को कोई भी सहायता मिल रही है यहाँ से? नहीं, हम लोग को कोई सहायता नहीं मिल रही है। हम लोग, मेरा बच्चा इधर कल रात से भूखा है, इधर कोई फूड कोई पानी नहीं है इधर, और मेरे हस्बैंड की फिर से फ्लाइट कैंसिल हुई, रीशेड्यूल फ्लाइट भी कैंसिल करी। आज भी आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई? हाँ, आज भी कैंसिल हो गई हम लोग की। People over here getting chaotic. They are losing their mind as well because they are not getting a clear answer. You can see the kind of situation. Ma'am, you're not getting any answer, any clarity from them? मैं कैसे जाऊंगी? आप बताओ, मैं अकेले यहाँ कहाँ जाऊंगी? आपको अदर एयरलाइन से बात करके टिकट कंफर्म कराइए। This is the reality. This is absolutely different from what the advisory is suggesting. That situation is normal. You move away from the terminal and you come to the reservation centers. People still losing cool. People still not getting assistance. People saying that their flights, some of it showing on time, but when they are coming here, their flights are getting cancelled, getting rescheduled. They are still not getting any surety whether they will be getting the flights tomorrow or not. मैं इस समय पर देखिए इंडिगो के विंडो पर खड़ा हूं। तमाम यात्री ऐसे हैं जो अपने सफ़र का इंतज़ार कर रहे हैं। सर, अब लग रहा है कि कुछ चीज़ें सामान्य हो रही हैं, कैसे? नहीं, अभी हमें पता चला कि हमारी सुबह देहरादून की फ़्लाइट यहाँ से कैंसिल हो गई है। देहरादून का पूरी बुकिंग थी, अभी तक हमको क्लियरिटी नहीं है कि कैसे है, और हमारा होटल बुकिंग और सब इम्पैक्ट। तो ये फ़्लाइट कैंसिल इज़ नॉट जस्ट अ लॉस ऑन द टिकट, इट इज़ अ लॉस ऑफ द होल प्लान ऑफ द पीपल। अगर आप देखोगे पूरे उनके प्लान ख़राब हो रहे हैं। बिजनेस साइड से बिग इम्पैक्ट पड़ रहा है। बिजनेस वालों को जो बिजनेस ट्रैवल करे तो स्टक हो गए। अब आप देखो, अब इंटरनेशनल इम्पैक्ट भी कैसे पड़ रहा होगा। अब सोच नहीं रहे, मगर अब इंटरनेशनल जो ट्रैवलर हैं उनके भी कैंसिल हो रहे हैं। उनका इम्प्रेशन क्या होगा इंडिया का? एक आपको जिम्मेदार मान रहे हैं कि ये दोनों गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी थी और ये एयरलाइन की भी जिम्मेदारी थी। 3 महीने का रोस्टर था, गवर्नमेंट ने रिव्यू नहीं किया कि रोस्टर उनका बन गया है कि नहीं, ये हुआ, ये 11th आवर में क्यों हुआ?
तो ये एक्सक्यूज सिर्फ एयरलाइन भी नहीं है, गवर्नमेंट के एस्पेक्ट में भी है फेलियर। बताइए नोटिफिकेशन मैसेजेस कुछ मैसेज के थ्रू ही आया है मॉर्निंग में 6:30 के आसपास में, योर फ्लाइट फॉर टू देहरादून इज कैंसल्ड, बस दैट्स ऑल, नथिंग। किसको जिम्मेदार मान रहे हैं कि गवर्नमेंट को कि इसने ये नए नियम इम्पोज कर दिए या एयरलाइन? See, government is bound to make rules and regulations. It is the duty of the airline to basically accustom themselves as per the rules. But they have not accustomed, and government has failed to make them comply. Government ka failure is they had failed Indigo to basically comply to the rules they have made. I think what's happened is extremely unfortunate, and it's caused a huge amount of inconvenience to passengers. I think all of us in the aviation sector have to do our very best to ensure that we minimize inconvenience for passengers. I'm sure that the government is working really hard to make sure that the problem is resolved at the earliest. I'm sure Indigo is doing their very best to ensure that the problem is resolved at the earliest, and in a very small way on our part at SpiceJet, we are attempting to help as well by running as many additional flights as we possibly can over the next few days to see that passengers are able to complete their journeys.